we had uh, started our discussion on the keywords of the preamble. We had discussed the concept of socialism. Now, another important word that is there in the preamble, it is secular. And from secular, comes this concept of secularism. Secularism is religious neutralism on the part of the state. That is, no state religion. No state religion. So basically, the state should be religiously neutral. There should be no official religion of the state. One or more points you can write it here. It is the aspect, the aspect that the state shall not concern itself. The state shall not concern itself with with religious beliefs, with religious beliefs, practices, and institutions, and institutions. Next, the state shall not be associated. The state shall not be associated with a particular religion. With a particular religion. Next, the state shall permit freedom of conscience, freedom of conscience, conscience, comma, beliefs, and religion for all the religions, for all the citizens, for all the citizens. Then one more point we can write here. The state shall not discriminate. The state shall not discriminate between the citizens, between the citizens on the basis of, on the basis of their religious beliefs, on the basis of their religious beliefs. Now, such statements may be there in your prelims examination, that which of the following statement is correct regarding secularism. But when we talk about the main examination, the analytical part is more important here. And here, if you talk about these aspects that we have written, generally this is an idea of the Western concept of secularism.
which is followed in the Western countries. And in the Western countries, there is a divorce between religion and state, means politics. The state is not to interfere in any way in the religious affairs. So this is the concept that we have written is the Western concept of secularism. You can write as note, N-O-T-E. Such an understanding, such an understanding of secularism comes to us, comes to us from the history of Western Europe, from the history of Western Europe, where where the domain 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 of state policy state policy and that of religion was separated full stop. In the words of one of the American presidents, one of the American presidents, Thomas Jefferson, you can put a hyphen and you can write within quotes, a line of or a wall of separation exists, a wall of separation exists between the state and religion. So in the Western countries, there is a wall of separation, means the state has nothing to do with the religious matters. Now, when we talk about India, in India, if we talk about the dimensions of Indian secularism, we have the Gandhian view, and the Nehruvian view. Gandhian view is of Sarva Dharma Sambhav, that is coexistence of all the religions. So Gandhiji basically he talked about coexistence of all the religions. What was the idea behind Gandhi? Gandhian thought was that Gandhiji was of the opinion that if the people of all the religions they will come together and they will fight for the independence of India, then we will be able to get independence in a shorter span of time.
That was his idea. That is why he talked about this concept of Sarvadharma Sambhav, or the coexistence of all the religions. Now, when we talk about Nehruvian view, Nehruji is also considered a secular person. And for Pandit Nehru, a secular state has got three meanings. You can write it for Pandit Nehru here. For Pandit Nehru, a secular state, a secular state carried three meanings. Carried three meanings. First, freedom of religion or irreligion for all. So, a person can be an atheist also. He may not follow any religion also. So, a person should be given the freedom of not following a religion also. Then, the state to honor all the faiths equally. When we say here, the word religion has not been mentioned. He has talked about faith, because these the things that we talk about, we call them as religion, but these are faiths. We have got faith in something. Faith in, we can say we can say an aspect, whether it can be God, whether it can be an Allah, what it can be. It is a faith that we have got faith in this guy. It can be Ganesha, it can be, we can say Saraswati, it can be anything. It is faith that we have got faith in him or her. Then third point, the state shall not be attached or the state not to be attached to any particular religion, to any particular religion or faith any particular religion or faith, comma, so that so that the particular religion or faith, the particular religion or faith becomes the state religion, becomes the state religion. So the state should not be attached to one particular religion, so that an idea should be that okay, this state is, we can say, is a, it belongs to a particular religion. Now, in India, secularism has got a legal dimension also. Means it has got the backing of law also. So, what are the legal dimensions of Indian secularism? First, Article 15 prohibits the state
from discriminating among the citizens on the ground of religion, along with some other grounds. Many other grounds are also there. So Article 15 basically prohibits the state not to discriminate among the citizens on the basis of religion, sex, class, caste, place of birth. That is in the use of wells, or we can say the tanks, the bathing ghats, then the public restaurants, hotels. So such type of discrimination cannot be done among the students, among the citizens. Then Article 16 prohibits the state from discriminating among the citizens on the ground of among the citizens in public employment in public employment on the ground of religion along with some other grounds. Here it is public employment, means in the government jobs. There shall be no discrimination among the citizens. There are other grounds also, but as we are discussing secularism, that is why I have mentioned religion. Then Articles 25 to 28 provide for freedom of religion as fundamental rights. Then Article 326 provides for universal adult suffrage. Suffrage means right to vote. Suffrage, franchise, vote are the same. So right to vote. And every adult citizen of this country, irrespective of his religion, caste, color, place of birth, he gets this right to vote. That is universal in nature. So these are the provisions of the Constitution which aims to make India a secular state. So if there will be a question in the main examination that what is the difference between the Western concept of secularism and the Indian concept of secularism, basically this will be your answer.
आप आंसर्स जो लिखोगे ना, अगर आप इस तरह से बेस करके लिखोगे फिलोसोफर की बात, तो लगेगा कि नहीं, ही इज अ वेल रेड स्टूडेंट, दैट इज द impression. Otherwise, in this country, everyone feels that he has done a PhD on secularism. So he can write here and there. But you're not supposed to write here and there. You'll have to be very much focused. Now, here, then another question that the UPSC is very fond of asking is the concept of positive secularism. The secularism that we have in India is known as the concept of positive secularism. Here you see that there is no uh, divorce between the state and the religion. The state helps you in following your faith or your religion. You see that when we talk about any religion, any faith, then the state treats all the religions equally. For example, if the state government, if the government, it helps or it felicitates the this Kedarnath Yatra, or we can say this Amarnath Yatra, then it also helps or assists the citizens who go on Hajj Yatra. We have got Hajj Bhavans, Hajj houses in every state capital. So, not only this, but then the state, it organizes the annual Kumbh. In the Kumbhs are organized in various places by the respective Minister of Tourism of that particular state. Suppose in Prayagraj, it is organized by Uttar Pradesh government. Then in Uttarakhand, that is Haridwar, the Uttarakhand government. In Nasik, by the Maharashtra government. So then not only this, the state also, it organizes the URS, basically the infrastructure, if we can say the preparations are made by the government of Rajasthan, the annual URS. So it is, we can say, equal treatment to all the religions. ये नहीं है कि सिर्फ एक ही रिलीजन के लिए आपको करना है, कोई भी रिलीजन हो आप देखोगे, इतना ही नहीं, स्टेट इंटरफेयर भी करती है इन द रिलीजियस मैटर्स. फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 25 क्लॉज 2, it clearly says that the state can initiate social reforms. State can initiate social reforms. तो स्टेट सोशल रिफॉर्म्स इनिशिएट कर सकती है और करती भी है. फॉर एग्जाम्पल, द ग्राउंड क्या है आपका, लोग क्या बोलते हैं हमारा कि अरे इट इज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 25 इज एन एब्सोल्यूट राइट, राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेस रिलीजन. द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ आर्टिकल 25 सेज subject to public order, morality and health. Janmashtami Utsav in our state, that is in the state of Maharashtra, the Supreme Court has fixed the height of the dahi handi. वो हड्डी उसका फिक्स कर दिया था. क्यों? पहले पता क्या होता था, वो पिरामिड बनाते थे, अब लोग गिर गए, इंजरी हो गई, इवन डेथ्स यूज्ड टू टेक प्लेस. सुप्रीम कोर्ट टुक नोट ऑफ इट, बोले नहीं, द हाइट हैज टू बी फिक्स्ड. चिल्लाए लोग यहाँ, कुछ लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी वाले, वो चिल्लाए कि नहीं नहीं, इट इज एन इंट्रूजन इन द कल्चर. बोला कोई कल्चर नहीं, लाइफ से बढ़ के कोई कल्चर नहीं, जिंदा ही नहीं बचोगे तो फेथ और कल्चर क्या है. देन द बैन ऑन इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये भी चीज है. देन द अलाउइंग ऑफ द एंट्री ऑफ वुमेन ऑफ ए पर्टिकुलर एज ग्रुप इन द सबरीमाला श्राइन. So state interferes. Sati has been banned in this country. So the state can interfere. This is the concept of positive secularism. State ऐसा नहीं है कि भाई आप अपना रिलीजन को फॉलो कर रहे हो तो आपको जो मर्जी यू डू इट. इट्स नथिंग लाइक दैट. द स्टेट विल इंटरफेयर. तो ये चीज, तो हमारे अंदर स्टेट रेगुलेट भी करती है. अब जैसे अपना गणेश उत्सव है, अब गणेश उत्सव में देखोगे कि जगह जगह पे हमारी मूर्तियां होगी गणेश जी की. अब गणपति का जो विसर्जन होगा उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले टोकन देंगे, आप इतने नंबर पे आइएगा विसर्जन के लिए, आप इतने नंबर पे आओगे विसर्जन के लिए, आप इतने नंबर पे आओगे विसर्जन के लिए. सिमिलरली जब दुर्गा पूजा उत्सव होता है कहाँ, अपने वेस्ट बंगाल में, देन इन वेस्ट बंगाल ऑल्सो सच टाइप ऑफ एफर्ट्स आर मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन. तो स्टेट रिलीजन से अलग नहीं है. स्टेट आपको हेल्प करता है
कि आप अपने रिलीजन को अच्छे तरह से फॉलो करो. This is the concept of positive secularism that we have in India. So such type of questions are asked in the main examination. The question of the positive secularism. So in India, negative का मतलब होगा the state will not interfere, जो कि western concept है. But in India, it is a positive concept. The state will honor all the faiths. The state will treat every religion equally. ये सारी चीजें. तो इस तरह के questions they are asked in the main examination. Now, basically, when we talk about secularism, there is debate going on in the country that whether India is a truly secular country or not. क्योंकि जब कभी सोचो ऐसे भी लिखने के लिए आएगा ना हमें कि भाई ऐसे ऑन सेकुलरिज्म इन इंडिया, so there are different dimensions that we have to touch. First of all, you have to write about the meaning of secularism, how the Indian concept of secularism is different from the Western concept of secularism. उसके बाद then, what is the debate going on in the country with respect to secularism? We have written here scholarly debates. ये नहीं कि वो पान दुकान में जो या फिर चाय दुकान में जो चर्चा होता है वो नहीं डिस्कशन है. स्कॉलरली डिबेट्स going on in the country with respect to secularism. Now, here when we talk about the scholarly debates, there are two views or there is difference of opinion. Some scholars say India is a secular country. Why? Because of the constitutional provisions. Some say that India is not a truly secular country. So these are the two debates. आप लिख लो first point में. There is difference of opinion. There is difference of opinion in India. In India, among the scholars, among the scholars, with respect to secularism. Full stop. Some scholars, some scholars are of the view that India is a secular state. Full stop. Such scholars have, such scholars have taken into consideration, such scholars have taken into consideration the constitutional provisions, the constitutional provisions with respect to secularism, with respect to secularism. Full stop. In the next paragraph, some scholars are of the opinion that India is not a
truly secular state is not a truly secular state. Full stop. Some of them have gone to the extent, or some of the scholars have gone to the extent of terming India as pseudo-secular, terming India as pseudo-secular. Pseudo means only for the namesake, pseudo-secular. Now, if you are asked a question in the interview that do you think that India is a secular state, you will say obviously that yes, sir. And if you are asked that nahi, there is a debate going on in the country, you say okay, sir. Some of the scholars they are of the view that India is not a truly secular country. Then the board can ask you that okay, what are the reasons? What can be the reasons that India has not been termed as a truly secular state by some of the scholars? Then what is the reason? You can write it. Such a scholars have put forward have put forward the following arguments have put forward the following arguments in support of their view in support of their views. Underline following arguments. First, the communal tensions taking place in the country at regular intervals. You see, India is a unique country. Why I say that India is a unique country? Because India and communal violence were born twins. On 15th August 1947, India got independence, and from that day, communal violence started in this country because of the unfortunate partition of India on the basis of religion. So, from that day, communal tensions started taking place in this country. So, not a single year passes where we do not have a major communal violence in this country. So, the scholars hold the view that in a secular country, there should be no communal violence. It may be the failure of the state also to imbibe in the minds of the people the idea of secularism. अब देखो 75 years of independence, but the education system has not been shaped in such a manner that the mind of the people can be changed through the education. And not only this, the way in which the communal violences are handled by the administration, it is also questionable. So, this is the first point that the scholars say that communal tensions should not take place in a country like India. Now, secondly,
the after effects of the Shah Bano case. Wherever you will read an article on secularism by any eminent person, you will see that there is a passing remark on the Shah Bano case. Some of you may be aware, some of you may not be aware about the Shah Bano case. I'll give you an idea about it. Shah Bano, as the name suggests, was a Muslim lady, and her husband had married another woman, and she used to live with that woman along with the husband. The husband was an advocate in the Madhya Pradesh High Court. Now, after some years, she was divorced and she was asked to leave home. She was a poor woman. She had no means of sustenance. Then she approached the Madhya Pradesh High Court and she asked for adequate compensation under Section 125 of the Criminal Procedure Code. Under Section 125 of the Criminal Procedure Code, जो अपना पुराना वाला अब तो नया आ गया है, उसमें ये लिखा हुआ है कि a woman if she is not able to sustain herself, she should be given adequate compensation by the husband who had divorced that lady. उसमें तो और भी बहुत चीजें हैं कि अगर पत्नी अलग भी रहती है ना, अगर वाइफ अलग भी रहती है, उसको भी मेंटेनेंस देना होगा हस्बैंड के द्वारा. So she went to the Madhya Pradesh High Court. The Madhya Pradesh High Court held that Shah Bano should be given adequate compensation under Section 125 of the CRPC. Then her husband, that is the former husband, he appealed against the judgment of the Madhya Pradesh High Court in the Supreme Court. And in the Supreme Court, he said, I will not give a single paisa to this lady. Supreme Court said, what happened? He said, means the lawyer obviously of the former husband said that I am not bound by the Criminal Procedure Code for this particular purpose. I am bound by the Muslim personal law. Muslim personal law was enacted by the British government to bring uniformity among the laws which were followed by various sections of the Muslims. So here basically he said that as per the Muslim personal law, he had to pay the amount of meher at the time of marriage and he had to pay the amount of iddat after divorce. इद्दत 3 महीने तक एक रकम है जो दी जाती है उसके बाद अपने डिवोर्स के बाद. तो बोला कि ठीक है, आई हैव गिवन द मेहर एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड द आफ्टर दैट आई हैव आल्सो गिवन दिस इद्दत. तो बोला ठीक है. उसके बाद कोर्ट ने पूछा और बोला यस, वन मोर थिंग आई वांट टू से is that the Muslim personal law is based on the law of the Almighty, whereas the Criminal Procedure Code has been enacted by the people, the individuals. And the law of the Almighty, how it will be inferior to the law of the individuals, human beings? Supreme Court bola aur kuch bola nahi. I am done. Then the Supreme Court said that you will have to pay adequate compensation to Shah Bano. Here,
secularism prevailed in this country. सेकुलरिज्म आ गया, मतलब कोर्ट ने भी बोला कि सेकुलरिज्म, तो कोर्ट ने कहा कि शी इज अ वुमेन फर्स्ट एंड देन शी इज अ मुस्लिम वुमेन। अभी एक दो दिन पहले भी कोई जजमेंट आया था इस तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आइडेंटिटी एज अ वुमेन इज मोर इंपॉर्टेंट आफ्टर, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकुलरिज्म प्रिवेल्ड इन दिस कंट्री। हियर द स्कॉलर्स टॉक अबाउट आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द शाह बानो केस। पॉलिटिक्स स्टार्टेड इन दिस कंट्री, जैसे हमारे देश में होता है हर एक चीज में पॉलिटिक्स हो गया, नदी में बाढ़ आ गई पॉलिटिक्स हो गया, एवरी यस कुछ भी होता है तो पॉलिटिक्स। सो पॉलिटिक्स स्टार्टेड इन दिस कंट्री एंड द priestly class, the imams, they started speaking against the judgment of the Supreme Court. That how the Supreme Court can interfere in religious matters? Cannot. इसके बाद the matter, the government was forced by certain groups to change the law. गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था, the government was pressurized, and at that point of time the judgment had come in 1985, the final judgment is of the Supreme Court. The Congress was in power at the center, and Congress is considered to be a secular political party, considered to be a secular political party. So the Rajiv Gandhi government was pressurized कि आप चेंज करो लॉ को, ऐसे नहीं होता है। उसके बाद फिर assembly elections were to take place in 5 states. Rajiv Gandhi felt it's a good time. We have got 411 members in the Lok Sabha. States में भी अभी elections होना है। If we will be appeasing this particular community, ये जैसा बोलते लॉ चेंज कर दो, तो ठीक है, जीत तो जाएंगे सब स्टेट्स में, मुस्लिम वोट्स मिल जाएंगे। And there was amendment that was made in the CRPC that if any law comes or if any law comes in conflict with section 125 of the CRPC, it is the religious law that will prevail, not the CRPC. The religious law will prevail. तो रिलीजियस लॉ का प्लेस ऊपर दे दिया गया। द फेमिनिस्ट क्रिटिसाइज्ड इट, लेकिन कितने फेमिनिस्ट हैं इंडिया में, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सब तो एलिट है, कोई भी वुमेन मूवमेंट तो इस देश में कभी हुआ ही नहीं। अब सोचो, एक महिला थी, उसके अगेंस्ट में पूरी कम्युनिटी के जो वो प्रिस्टली क्लास थे वो पीछे लग गए कि नहीं यार उसको कैसे मिल जाएगा, ये तो फिर गलत हो जाएगा। सो इन दैट केस, that is in the Shah Bano case, for the first time the Supreme Court said why we should not expedite the possibility of a uniform civil code in this country. That is, we can say, the background. That is the significance of the Shah Bano case. तो स्कॉलर्स ने यही बोला कि शाह बानो केस के बाद जिस तरह से आपने सेक्शन 125 को चेंज कर दिया, द रिलीजियस लॉ विल प्रिवेल, इट पुट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन सेकुलरिज्म इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट आपका सेकुलरिज्म अपहेल्ड कर रही है, बट योर पॉलिटिकल लीडरशिप और लॉ तो चेंज कर दिया। कांग्रेस फेल्ट दैट इट विल विन ऑल द इलेक्शंस भी हुए 5 स्टेट्स में, and in all the 5 states the Congress was defeated. ये जो बोलते हैं ना अपीजमेंट पॉलिसी, ये सब उसी टाइम पे शुरू हुआ, और पहले भी अपीजमेंट पॉलिसी, अपीजिंग अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये स्कॉलर्स, ये मेरे व्यूज नहीं, ये सब स्कॉलर्स के व्यू हैं, क्योंकि अपना व्यू आप देखोगे तो यू विल गो हियर एंड देयर।
So what happened after the Shah Bano case? It puts a question mark, according to some of the scholars, on Indian secularism, that where Indian secularism is going. And third, अगर आप सिर्फ इस पॉइंट को बोलोगे ना, तो बोलेगा अरे ये तो हिंदू है लगता है। हाँ, क्योंकि शाहबानो केस के बारे में बोलता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोलता है, मीन्स ही इज अ हिंदू और शी इज अ हिंदू, द कैंडिडेट इज अ हिंदू वन। लेकिन तो इसीलिए बहुत ही बैलेंस्ड हमारा अप्रोच होना चाहिए। द थर्ड argument is the demolition of the Babri Masjid. It was the darkest day in the history of secular India. The way in which an ancient religious, we can say, institution, structure was demolished, it put a question mark that whether the minorities are safe in India or not. In the broad daylight, before your paramilitary forces, your local police, the Babri Masjid was demolished. So basically, ये व्यूज हैं। इसको लेकर के कुछ स्कॉलर्स ये बोलते हैं इंडिया इज नॉट ए ट्रूली सेकुलर कंट्री। नाउ द क्वेश्चन बिफोर अस इज व्हाट टाइप ऑफ सेकुलरिज्म कैन बी फिजिबल इन इंडिया। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि वी विल नॉट फॉलो आवर फेथ, विल नॉट अबाइड बाय आवर रिलीजन, वो गलत है। देन वी विल बी कंप्लीटली सेकुलर, दैट इज ए रॉन्ग नोशन। That is a wrong notion. Faiths cannot be changed. अगर सपोज कि आप आज सुबह उठ के पूजा करते हो, सब कुछ करते हो, नमाज पढ़ता है, आप अगर आईएएस ऑफिसर बन जाओगे तो थोड़ी ना तुम पूजा करना और नमाज पढ़ना छोड़ दोगे। इट इज अ मैटर ऑफ फेथ, इट इज अ मैटर ऑफ फेथ। वो फेथ है आपका कि मैंने ये पूजा की, मैंने इनमें आस्था दिखाई, देन आई हैव बिकम दिस। सो हाउ यू कैन लिव दिस, इसलिए उसको बोलते हैं फेथ, आस्था। तो आपकी आस्था है किसी चीज में, यू कैन नॉट लीव दैट टू प्रूव दैट यू आर अ सेकुलर पर्सन। इट्स नॉट लाइक दैट। तो इंडिया में secularism in the sense that we feel that the ministers will not follow the religion, the bureaucrats will not follow any religion, then India will be a secular state, ये थोड़ी ना होता है। It is not feasible. And then comes the question, who is secular in India? If a political party talks about the interest of the majority, it is not termed as secular. And if a political party which talks only about the minorities, it is also not secular. आप देखते हो कोई इलेक्शन की मीटिंग में कोई साधु संत लोग को बिठा देता है, कोई मौलाना लोगों को बिठा देता है। हु इज सेकुलर टुडे? नो वन इज सेकुलर। तो उस सेंस में सेकुलरिज्म मे नॉट बी फिजिबल इन इंडिया। व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन वे बैक 93 to 96, then I had read an article by Asghar Ali engineer. He used to write a lot on secularism. And Asghar Ali engineer had written, वो अभी तक मुझको याद है, उन्होंने कहा था इन इंडिया पीपल आर मोर सेकुलर बट द गवर्नमेंट इज मोर कम्युनल। द पीपल आर मोर सेकुलर बट द गवर्नमेंट इज मोर कम्युनल। दिन भर हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। वाटर लॉगिंग हो गया उसका चिंता नहीं, उसका चिंता नहीं है। आज जब बाढ़ आ जाएगी तब 3 ऑफिसर्स आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, अच्छा यहाँ बाढ़ आ गई, है ना। इनको फुर्सत क्या हिंदू मुसलमान करने से। सो दे आर मोर communal, the political party. When we say the
party, government, the state. It means we are talking about the political party. All are the same. So India में what type of secularism is feasible? So one of the scholars he held that in India what can be feasible or what type of secularism it is tolerance. It is tolerance. This is required in India. What is tolerance? If someone feels good in eating something, he should be allowed to do that. If someone feels comfortable, inner peace of mind, by reading a certain text, he should be allowed to do that. If a person wants to go to a particular place to worship, he should be allowed to do that. Tolerance. But in a multicultural society, apart from tolerance, we need to respect the culture and tradition of others. This is also very important. If pork is prohibited in Islam, then we should refrain from throwing a piece of pork near a mosque. If beef, cow slaughter is not considered good in Hinduism, the people should refrain from doing it. वो रिफ्रेन कर सकते हैं ये चीज है so this is tolerance self respect towards others but how such type of things will be feasible how a person will become a tolerant person how he will give respect to others it is because of it is by education it is by education so when we talk about education there was a Jnanpith awardee. Her name was Kurutul and Heather. She was asked a question that, ma'am, how secularism will be made possible in India? She had answered that in India, if we will have 5 to 6 more universities like Aligarh Muslim University, obviously communalism can be dealt with. So here we should not go into the text of what you are saying. AMU, Aligarh Muslim University, is the personification, it is the symbol of good education, quality education. She was talking about quality education. That if quality education is given to the people, then obviously what will happen? There will be tolerance. Up. When we talk about the significance of education, what is the significance of education? You may have heard about UNESCO. UNESCO का नाम सुना है? What is the full form of UNESCO? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Now, when we say this UNESCO, the motto of UNESCO is since war begins in the minds of men, it is the minds of men that needs to be changed. Love, hatred, everything starts here. So if you will change the mind, if the heart of the individual, the mind of the individuals, then only war can be avoided and that can be done through education. So education is the key word here, not literacy. Literacy and education, these are two different things.
So education is important. तो अगर आपसे भी कोई पूछेगा ना कि भाई क्या है, तो बोलेगा सर एजुकेशन इज द वे आउट। तो आप बोलोगे सर हाउ एजुकेशन इज द वे आउट, बोले एजुकेशन शेप्स द माइंड ऑफ द पीपल। एजुकेशन शेप्स द माइंड ऑफ द पीपल एंड नॉट ओनली दिस, another thing that we have seen in the present day society, that wherever there is a developmental vacuum, then religion enters, fundamentalism enters. Where there is a developmental vacuum, जहां विकास की कमी होती है, डेवलपमेंट की कमी होती है, वहीं पे देखोगे फंडामेंटलिज्म घुसता है। ऐसे फंडामेंटलिज्म नहीं आएगा। यू सी द कंट्रीज वेयर वी आर हैविंग रेगुलर कम्युनल वायलेंस, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब जो सोसाइटीज हैं, इनको आप देखोगे दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो यहां पे रिलीजन एंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। गुड एजुकेशन विल गिव वर्क टू एवरी हैंड। आपका सोसाइटी इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं रहेगा। लोग काम में बिजी रहेंगे तो दंगा कौन करने जाएगा? ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो एजुकेशन विल गिव वर्क टू एवरी हैंड। सो दैट इज व्हाई बेसिकली एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन होगा, टॉलरेंस होगा, वर्क टू एवरी हैंड होगा। So such type of ideas have to be developed. More ideas can be given to you by our teacher who will be discussing with you the social issues, because communalism is a social issue. So ये तो हुआ secularism, a brief idea that I needed to give you from the polity point of view. Now, after this word secular, there is another word that is there in the preamble. It is democracy. Democracy is a combination of two words. Demos plus Gracia. Demos means people, Gracia means rule. Democracy will mean rule by the people. Now here, coming to this, we can say the aspect from the prelims point of view. In the prelim syllabus, I had told you there's a topic called political system. So questions can be there in the prelims examination on democracy. Now, when we say democracy, first of all, democracy will mean democracy as a form of government. This is the first understanding. Now, when we say democracy as a form of government, this is the most popular meaning of democracy, that it is a form of government. Now, when we say democracy is a form of government, what are the connotations of it? Presence of more than one political party, competing for
people's vote. Now, when we say presence of more than one political party, it is one of the important aspects of democracy. So here, going by this standard, China may not be termed as a democracy. Why? Because political parties are the reflections of the ideology of the masses. वो हमारी आइडियोलॉजी को शो करते हैं। अब सपोज कि क्लास में हम लोग बैठे हैं, हम लोग की अपनी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजीज, एंड आप सोच सकते हो दैट इन अ कंट्री लाइक चाइना, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज, एंड द पीपल आर थिंकिंग इन द सेम वे. Now, if in the constitution of China, the Communist Party would not have been made the official political party, would have not said anything. But officially, it is the Communist Party of China which is the vanguard of the mass. Constitutional status मिल गया है. Political party और state में government में कोई difference ही नहीं है. ये चीज है. So what I was discussing with you was that democracy is a form of government, presence of more than one political party, competing for people's vote. Then secondly, regular elections based on universal adult suffrage. Regular elections based on universal adult suffrage. Then freedom of press. Then rights and liberties. Enjoyed by the citizens. Then ruled by the majority. But respect for, sorry, but recognition of minority rights. So when we talk about democracy as a form of government, so
This is the feature of democracy as a form of government. Now, in the prelims examination, if the question is, which one of the following is a feature of liberal democracy? So, these are the features of liberal democracy. Now, this is the first and it is a popular aspect of democracy. Democracy as a form of government. Now, there is another connotation of democracy, that is democracy as an ideal. Here we are talking about a democratic society. So, democratic society is that society where prevails justice, liberty, and equality. So, as a state, there can be monarchy also. There can be monarchy also. बहुत सारे देशों में देखोगे monarchy है, the king is there. But the people of that particular country, they say that our king is democratic. Our king is democratic. It means he gives importance to the freedom of every person. He treats everyone equally. He imparts justice. So he is considered as a democrat. So democratic society, democracy as an ideal. So even if you have a democracy, a democratic government, until unless the society is not democratic, then obviously the democracy will not be successful. Then the success of democracy, or essay you can write, democracy is based on rational thinking, is based on rational thinking as the decisions are made by consultation. So in democracy, there is consultation, there is discussion, and then basically the decisions are arrived at. These are the, so democracy basically is based on rational thinking. So if the people do not think rationally, democracy will not be successful. Uh, ये तो वह statements होंगे, which of the following statement is correct. Now, coming to the second aspect of democracy that we need to understand, democracy as a political system. You see, in some of the countries, we have direct democracy, and in some of the countries we have indirect democracy.
Direct democracy means there is direct participation of the people in the governance. Indirect democracy is ruled through the representatives of the people. It is also known as representative democracy. In most of the countries, we have got this indirect democracy. In India also, you see, we elect our government and we elect them for 5 years and we take rest. They make laws for us. But in direct democracy, what happens? That people are directly involved in the governance process. How it is done? देखो indirect democracy तो we all know. In almost all the countries we have got indirect democracy. In America also you see the people elect the American president and then they forget. After 4 years again they will be taking part in the elections. अभी देखो whatever Donald Trump had done, people may have forgotten or may not have forgotten, I don't know. But he is contesting again. He is contesting again, and he may be the winner also. So the it completely depends on the people, and the people will take rest for another 4 years, and again elections. So in most of the countries we have got this representative democracy. Now we are more interested in knowing about direct democracy as a political system also from the examination point of view. There are certain devices of direct democracy. Initiative, referendum, recall, and plebiscite. These are the four devices of direct democracy. One by one, I'll tell you. First of all, coming to initiative. Here you can write in initiative. Initiative is a device, or it is a device by which people initiate the laws to be made. People initiate the laws to be made. So in our country, you say, or in most of the countries where we have got indirect democracy, the government initiates the laws, it makes the laws for the people, and when the head of the state signs it, then we'll come to know that, okay, this law has been made for us. But in direct democracy, what happens? The people will initiate. People will initiate means the majority of the people
will request the government to make a law on a certain aspect, and that law will be made by the government. So majority of the people will initiate. It is not one, two, three, four, five people, but the majority of the voters will request the state. Then in referendum. Referendum is a device. Referendum is a device by which by which a law made by the state by which a law made by the state is referred is referred to the people is referred to the people for their approval for their approval. So in our country, what happens? Law is made by the state, then we come to know about it. The head of the state signs it. In direct democracy, what happens? That if the government will make a law, then as the voting takes place in a country, there will be proper voting. There will be booths and there will be ballot boxes, yes and no. And if the majority of the voters they say yes, then only the law will be implemented. Otherwise, the law will not come into force. That is referendum. Making a law, referring it to the people for their approval. Then coming to recall. Recall is a device. Recall is a device by which the elected representatives by which the elected representatives can be called back if the majority of the voters wish the same. So if the majority of the voters they want that their representative is not working well, if he is not delivering, if they pass a resolution, then the representative will be called back. That is recall. आपने किसी को चुन के भेज दिया, आपको कभी भी लगता है कि नहीं ही इज नॉट वर्किंग वेल, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको वापस बुला सकते हो. दैट इज रिकॉल. देन प्लेबिसाइट. Plebiscite is a device. Plebiscite is a device by which the views of the people, the views of the people can be ascertained, ASCERTAINED, can be ascertained on question of political importance, on a question of political importance. For example, if the people of Jammu and Kashmir will be asked a question that whether Jammu and Kashmir should be given autonomy or not, then that will be a plebiscite. An open-ended question. Generally, people get confused in referendum and plebiscite. Referendum is a law is already there, a law has been made, it will be referred for approval. Plebiscite, no laws have been made, the views of the people are to be ascertained here. ये तो हुआ डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. ये सब प्रीलिम्स में आएंगे इसी तरह से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी?
Now, the next question before us is, if such type of direct democracy exists in any part of the country, any part of the world, yes. To some extent, it is there in Switzerland. Initiative and referendum. You can write here as note, NOTE. Initiative and referendum. Initiative and referendum are in practice, are in practice, are in practice Switzerland, in Switzerland, in case of constitutional laws, in case of constitutional laws. So not in case of the ordinary laws, only in case of constitutional laws. You will ask me that, sir, what is a constitutional law? If the constitution of Switzerland is to be amended, then first of all, the initiative has to be from the people of Switzerland. 10,000 voters will initiate and they will request the state to amend these provisions of the constitution. After that, the state will ask the people, means the government of Switzerland will ask the people that we have received a request from 10,000 of the citizens that the constitution has to be amended. What you say? If 50,000 voters, they say yes, then the constitution is amended. And after the constitutional amendment bill is passed by the legislature of Switzerland, it will be referred to the people again. तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना ना स्विट्जरलैंड का, तो लोग इनिशिएटिव लेंगे, वहां के लोग जो है वो इनिशिएटिव लेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाएगा, तो फिर वो रेफर किया जाएगा लोगों को कि वेदर यू एक्सेप्ट इट और डू नॉट एक्सेप्ट। ये तो हुआ। अब नाउ व्हेन वी कम टू इंडिया, इसके बाद कुछ और भी कंट्रीज हैं जहां पे है थोड़ा कुछ हद तक है रेफरेंडम, जैसे फ्रांस में, उस वो भी लिख लो यहीं पे। इन फ्रांस, इन फ्रांस referendum is in practice under the following conditions. Under the following conditions. First, the French president, the French president can refer a constitutional amendment bill, can refer a constitutional amendment bill passed by the French legislature, passed by the French legislature to the people in a referendum, in a referendum. Next. Secondly, all the international treaties, sorry, all नहीं लिखना, ऐसे लिखो इसको, an international treaty or an agreement, an international treaty or an agreement signed by the French president, signed by the French president or on his behalf, or on his behalf,
may be referred by the president, may be referred by the president to the people in a national referendum, in a national referendum. May, it all depends on the president. तो ये दोनों में may है. Then next point you can write thirdly. As per the French Constitution, as per the French Constitution, comma, a bill on social security, a bill on social security passed by the French legislature has to be referred to the people in a national referendum, in a national referendum. तो यहां क्या है? सोशल सिक्योरिटी. व्हाट इज ए सोशल सिक्योरिटी? ओल्ड एज पेंशन, देन स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल. तो अगर आप इनके लिए कोई लॉ बनाते हैं, फिर फॉर एग्जांपल स्पेशल असिस्टेंस टू द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, तो आपको यू हैव टू, मीन्स द प्रेसिडेंट must ask the legislature to refer the matter to the people in a national referendum. क्यों? The logic. This is people's money. This is people's money. आप कोई भी चीज फ्री नहीं होता है. हमारे देश में एक देखोगे खाली फ्री फ्री बोलते हैं, बट इट इज नॉट फ्री. इट इज नॉट फ्री. कोई भी चीज फ्री नहीं है. नथिंग इज फ्री. Even if the government is giving food grains, then to the people who are living below the poverty line, it is the taxpayers' money. आप भी उसके लिए टैक्स देते हो. डायरेक्ट टैक्स दो या इनडायरेक्ट टैक्स दो. कल मैं आप लोगों को बता रहा था कि वो जो बच्चे तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, स्टाइपेंड और ये सब गवर्नमेंट देती है, ये भी फ्री नहीं है. ये टैक्सपेयर का ही पैसा है. ये टैक्सपेयर का पैसा है. जो बच्चों को 5,000, 10,000, 20,000 जो भी गवर्नमेंट देती है, वो क्या है? इट इज टैक्सपेयर्स मनी. कुछ न किसी को तो देना पड़ेगा ना. अब कहीं पे आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी कर दोगे, तो जब आपने फ्री इलेक्ट्रिसिटी कर दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उतना तो चार्ज लेगी ना. तो गवर्नमेंट दे रही है वो सब्सिडी के रूप में. वो पैसा कहां से है? वो तो टैक्सपेयर का पैसा है. इट इज टैक्सपेयर्स मनी. नथिंग इज फ्री. So when nothing is free, it is the taxpayers' money. You need to take the approval of the people. You need to take the approval of the people. कि we are going to use your money. हमारे यहाँ लेकिन हम लोग थोड़ा दूसरा तरीका हमारे यहाँ है. लोकसभा को ये सब पावर है, अगर मनी बिल और ये सब आता है, because it is the people's representative. That is the thing. And your state, it is the state assembly, which will be approving all the taxes, all the expenditures of the government of India. क्योंकि sorry, government of your state. Now the question before us is direct democracy feasible in India or not? ये मैंने आपके सामने ये 4 रख दिया devices. So if such type of democracy may be feasible in India or not, मुझे नहीं मालूम, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ. ये feasible है इंडिया में? अच्छा अच्छा. नेशनल लेवल में क्यों नहीं फिजिबल है? इसमें क्या मशीनरी रिक्वायर्ड हो?
ऑनलाइन ऑप्शन है नहीं? नेटवर्क आता है यहाँ पे? नेटवर्क आता है? हाँ, मैं तो सोचा था पुणे में ये सब एमएनसी वेमएनसीज है, यहाँ नेटवर्क ठीक होगा, यहाँ तो नेटवर्क आता ही नहीं है। ये भी नहीं कि तुम बेसमेंट में हो, तुम फर्स्ट फ्लोर पे हो फिर भी नेटवर्क की दिक्कत है। कनेक्टिविटी तो प्रॉब्लम है ना। उसके अलावा अगर तुम बोल रहे हो कि हम टेक्नोलॉजी का भी यूज करोगे, तो टेक्नोलॉजी में क्या चाहिए हमें? टेक्निकल लिटरेसी चाहिए ना। हमारे देश में लिटरेसी है ही नहीं, तो टेक्निकल लिटरेसी कहाँ से होगी? If you give mobile to a person, even a beggar is using a mobile phone now. It does not mean that our country is a developed country. वो सिर्फ उसमें रील देखता है। यस, वो सिर्फ उसमें रील देखता है। वो देखोगे फुटपाथ पे बेगर्स हैं, वो रील देखते रहेंगे, उनके छोटे छोटे बच्चे वो भीख मांगते रहेंगे। वो भी टेक्नोलॉजी है, देश बहुत आगे बढ़ गया है। समझिए ये है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, इनिशिएटिव और रेफरेंडम, इसके लिए सबसे बड़े, अगर आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हो, यू विल रिक्वायर a स्मॉल पॉपुलेशन एंड देयर शुड बी लेसर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी क्लैश। देयर विल बी क्लैश। इंडिया में नहीं देखते, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी द होल कंट्री इज डिवाइडेड इन द नेम ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, then regional aspirations are there, caste is there. So it is not feasible that we all have the same demands. The demands can clash also. The demand which may be justified for your state may not be justified for the other state. और महाराष्ट्र में ही खुद तुम देख लो, मराठवाड़ा, विदर्भ, अलग अलग एरियाज हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग नीड्स हो सकते हैं। तो बेसिकली what we see here is that because of diversity, then we can say large population, ये सब feasible तो है नहीं इनिशिएटिव वगैरह। रेफरेंडम में नॉट बी feasible in India, क्यों? Because of lack of awareness among the people with respect to the issues, with respect to the issues। तो इश्यूज के बारे में हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या इश्यूज हैं क्या नहीं इश्यूज हैं। हम तो छोड़ दो, आवर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, दे मे नॉट बी अवेयर अबाउट द इश्यूज। वो तो वोट दे देते हैं पार्टी लाइन पे। यस, वो तो वहां पे पार्टी लाइन पे, पार्टी हाँ वोट देना इस बिल के फेवर में, तो दे वोट। तो आप सोचो कि व्हेन वी टॉक अबाउट अवेयरनेस, जब तक अवेयरनेस नहीं है फिर तो वही हो जाएगा ना। इतना बड़ा देश है, पीपल आर नॉट अवेयर, दे डू नॉट गेट 2 स्क्वायर मील्स अ डे। खाना जिसको नहीं मिलता, देयर इज लिटरल इलिटरेसी, हाउ दे विल गिव ओपिनियन ऑन जीएसटी? इफ द जीएसटी बिल इज पास, और तो छोड़ दो, ये तीनों जो क्रिमिनल लॉज पास हुए हैं देश के, मुझे भी पूरी तरह से पता नहीं है कि क्या क्या उसमें क्लॉजेस हैं क्या नहीं है, बिकॉज आई डू नॉट बिलोंग टू द लीगल फ्रेटर्निटी, आई डू नॉट बिलोंग टू द लीगल, तो मुझे भी नहीं पता है। अब आईटी सेक्टर में कोई लॉ पास हुआ, ओनली सम पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। If an economic law has been passed, some people who are experts in economics, they may be able to understand it. The general population may not be able to understand it, even if it is educated. So lack of awareness among the issues. And then when we say recall, recall is also not feasible in India because of the election system that we have. अलग अलग रीजन से अलग अलग। देखो, व्हाट इज द इलेक्शन सिस्टम? मैं 2011 में पढ़ा रहा था बैंगलोर में। तो वहां पे क्या था ना, बैंगलोर में बेसिकली बहुत ही जो स्टूडेंट का या फिर जो भी कम्युनिटी पूरा वहां बोलो, फिर वेरी अवेयर, इट इज कैन से अवेयरनेस इज देयर इन द सिविल सोसाइटी। पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे हैं, टेक्नोलॉजिकल हब है, ये सब है। So at that point of time, the Anna movement was going on in India. Delhi में वो अन्ना हजारे was protesting and he was asking for this Jan Lokpal and he was saying that we should have direct democracy. So this was the hot topic at that point of time. So I was discussing this topic with my students and my most of my students were technocrats. वो मंडे टू फ्राइडे नौकरी करते थे बेचारे और संडे संडे की क्लास करते थे, वीकेंड क्लासेस उनकी होती थी।
और वही वो बैच रिजल्ट भी दिया। वो बैच बहुत रिजल्ट देता था, मतलब वीकेंड के बच्चे हैं ना, और वो एक बार उनको नौकरी करने की आदत है, बैठने की आदत है, वो बैठ के पढ़ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So all were technocrats. So I asked them this question. They said, one of my students said, sir, recall is possible. Ah, we can recall them if they will not be able to perform well. ठीक है, if they will not perform well. But I explained him the phenomena that why recall may not be feasible in India. वो आपको भी आज भी मैं बताता हूँ कि why recall may not be feasible. बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा पुणे का एमपी काम नहीं कर रहे हैं, वापस बुला लो, रिजोल्यूशन पास कर दो, बट इट्स डिफिकल्ट। क्यों? Because of the election system that we have. Our election system, it is known as first past the post system. This first past the post system is used in India to elect the members of the Lok Sabha, state legislative assemblies, and also the Gram Panchayat. Now, in the first past the post system, the candidate who relatively gets more number of votes is declared as the winner. Here it is not majority, relatively more number of votes than the others. For example, suppose if we have got these candidates, A suppose has got 2,500 votes, B has got 1,980 votes, C has got 2,000 votes, D has got 850 votes, and E has got, who will be the winner here? E is the winner here. But E is not popular. E is not popular. He is, E is not liked by the majority of the voters. If you calculate the votes of A, B, C, and D, their combined votes will be much more than what E has got. हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है. That is the problem of legitimacy. Maximum voters may not vote for that candidate, even then the candidate will win. So, if recall is there in India, from the very first day, this person will be called back. क्योंकि ये सब चारों मिल जाएंगे, ये तो चल जाएगा मुंबई जीत के विधानसभा में, या ही विल गो टू दिल्ली बाय विनिंग द लोकसभा सीट. ये चारों मिल जाएंगे एंड रिजोल्यूशन विल बी पास्ड अगेंस्ट हिम. सब वोटर्स का सिग्नेचर करवा लो, ये तो गया बेचारा पहले दिन से. बट अगर हमारे यहाँ, if in India we will have proportional representation system, proportional representation system में the candidate will have to get more than 50% of the votes in order to get elected. जो मैंने बताया था ना, फ्रेंच प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है, there is more than 50% of the votes, then only the person will be elected as the French president. हमारे यहाँ अगर ये सिस्टम हो that if a candidate will be getting more than 50% of the valid votes, then he is a popular person.
and then there is a decline in his popularity. फिर एक साल के बाद देखो नहीं रिकॉल आया मतलब there is decline in his popularity. Then recall can be feasible in India. Under these circumstances, recall may not be feasible. ये हुआ तो रिकॉल इज ऑल्सो नॉट फेसिबल. प्लेबिसाइड तो डिपेंड करता है आपके देश के ऊपर. आप चाहो तो ला सकते हो, पूछ सकते हो लोगों से उस विषय पे, किसी पे नहीं तो नहीं भी पूछ. इसमें क्या है? ये हुआ आपका रीजन. ठीक है, अगले सेंटेंस में लिखना. इन इंडिया, इन इंडिया direct democracy may not be feasible. Direct democracy may not be feasible because of its large population, its large population, diversity, comma, lack of awareness among the people, lack of awareness among the people with respect to issues, with respect to issues and the type of election system that we have, and the type of election system that we have. एक ही बार में सारा हमने लिख लिया. ठीक. बट अगर आपसे कोई पूछेगा कि ठीक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में नॉट बी फिजिबल इन इंडिया, तो व्हाट इज द वे आउट? इंडिया में क्या फिजिबल है? तो जो आपका नाम क्या है, लोकेट, तो इन्होंने जो बताया ना मॉडल कि लोअर लेवल में इट कैन बी डन एट द ग्रास रूट लेवल, क्योंकि पॉपुलेशन भी छोटा होता है, 1000 लोग हैं, 1200 लोग हैं, so you can involve the people in the decision making process. So in technical terms, in the terms of political science, such type of democracy is termed as participatory democracy. लिख लो full stop के बाद. But what can be feasible in India? But what can be feasible in India is participatory democracy. Participatory democracy, that is, अब इसको पॉइंट्स में लिख लो. Strengthening the grassroots democratic institutions like the Gram Sabhas and the Gram Panchayats. देखो, some of you may or some of you may not be aware about this difference between Gram Sabha and Gram Panchayat. Gram Sabha consists of all the villagers. जो पूरे गांव में जो वोटर्स लिस्ट में जिसका भी नाम होता है, they will be the members of the Gram Sabha. For example, suppose if we are living in a village and if our name is there in the voters list, we all will be the members of the Gram Sabha. ये हुआ Gram Sabha. When we say Gram Panchayats, the whole village is divided into different wards.
वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, एंड one representative is elected from every ward. So they are known as the members of the Gram Panchayats. So the Gram Panchayats, the members of the Gram Panchayats are elected. They are elected. Whereas all the villages are the members of the Gram Sabha. Now, so a person may not be aware about the issues at the central level. He may not be aware about the state issues, but the person must be aware about the problems that he is facing at the village level. Village roads, rural electrification, then rural education, pre-adult education. He may have got some views regarding it. This is the point that we have written here. So here in the policy making process, the BDO should consult the members of the Gram Panchayats. Then secondly, making the political parties and the bureaucracy more responsive to the people. It is not responsible, responsive. What is the difference between responsive and responsible? You see, for the completion of the topics, I am responsible to the management. The management will ask me that whether you have completed these topics or not. But in the class, I should be responsive to your needs. I should respond to your needs. I should teach in accordance with the needs of the examination. अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा? You will feel alienated. You will feel alienated. कॉलेज वॉलेज में बच्चे क्यों नहीं जाते हैं पढ़ने? रीजन है, दे फील एलिएनेटेड। क्या क्या सर कुछ पढ़ाते नहीं आते हैं, लेक्चर देके ऐसे चले जाते हैं। यस, ये क्या है, खाली अटेंडेंस लेकर के टीचर चला जाता है, पढ़ाता ही नहीं। एलिएनेटेड। आज इंडिया में इफ यू सी, इंडिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का जो मेजर प्रॉब्लम है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ एलिएनेशन। पीपल आर एलिएनेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, पीपल आर एलिएनेटेड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, पीपल आर एलिएनेटेड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम लोग आज क्या है कि अच्छा ये तो काम पॉलिटिकल पार्टीज का है, दिस इज द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज द वर्क ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। ये हमें क्या मतलब है, हमें क्या मतलब है? तो हम क्यों नहीं पार्टी, हम क्यों नहीं होते? व्हाई? द रीजन इज दैट आवर पॉलिटिकल पार्टीज एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिव टू अस। वो हमें रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं, वो हमें रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो ये मेजर, इसलिए लोग आज के दिन में ये पॉलिटिक्स है, वोट देने भी कौन जाएगा? यस, many people do not vote in this country because they feel that the political parties, they are not responsive. वो आज सिर्फ वोट के लिए आ रहे हैं, बाकी तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब आप बोलोगे सर, हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ द ब्यूरोक्रेसी विल बी रेस्पॉन्सिव टू द पीपल? यहाँ बहुत ही इजी से ये पूरा न्यू मार्क्सियन अप्रोच है। इट इज अ न्यू मार्क्सियन अप्रोच। मैं पूरा आपको ना पूरा जैसे एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट पढ़ता है ना, वैसे आपको अप्रोच करोगे तो एग्जामिनेशन में लगेगा कि अच्छा मेंस में अच्छा ही नोज मेनी थिंग्स। आपको स्टूडेंट होना पॉलिटिकल साइंस का जरूरत नहीं है, बट यस यू नीड टू डेवलप सच एप्टीट्यूड व्हेनेवर यू टॉक टू पीपल। अब यहाँ पे अब आपने बोला कि सर, उन्होंने अगर आपसे बोर्ड पूछता है कि हाउ इन इंडिया डेमोक्रेसी विल बी
made more practical so that there will be participation of more and more people. We should say that a direct democracy may not be feasible at the central level or at the state level also. But yes, we can have the model of participatory democracy. So what is this model of participatory democracy? बोलोगे sir, basically here there are certain components of it. We should strengthen the Gram Sabha, the Gram Panchayat. Then sir, the political parties and the bureaucracy should be more responsive to the people. अब वो पूछेंगे, what is this responsive? How the political parties will be responsive? फिर आप बोलोगे sir, uh, before making the election manifesto, the people should be consulted by the political party. अब लोकसभा का चुनाव तो होता है, ठीक, हर एक पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली में बैठा हुआ है और वो क्या करता है, अपना घोषणा पत्र लेके आता है, मैनिफेस्टो लेके आता है, ठीक। अब उसमें पुणे के लोगों को पूछा भी नहीं जाता कि यहाँ के प्रॉब्लम क्या है, कोल्हापुर के लोगों को पूछा भी नहीं जाएगा कि वहां का प्रॉब्लम क्या है। वो इलेक्शन मैनिफेस्टो में उस जगह का नाम भी नहीं लिखा रहेगा जहां से वो एमपी चुनाव लड़ रहा है। हाउ द पीपल विल कनेक्ट, हाउ द पीपल विल कनेक्ट। लेकिन अगर सपोज इलेक्शन मैनिफेस्टो है, उसमें दो पार्ट्स हैं। सपोज इफ ए पर्सन इज कंटेस्टिंग फ्रॉम नागपुर, वो लिखेगा प्रॉब्लम्स ऑफ नागपुर, और वो अपने पार्टी वर्कर्स को पहले भेजेगा कि आप जाके नागपुर में हर एक मोहल्ले में गली गली में जाकर के पूछो कि आपका क्या प्रॉब्लम्स है। मेजर प्रॉब्लम 5-7 वो हाईलाइट करेगा, वाटर लॉगिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, रोड्स, कहां कहां मेजर रोड टूटा हुआ है। आप इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखो कि ये हम ठीक करेंगे, और उसके बाद लिखो द नेशनल प्रॉब्लम्स, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन है। पीपल विल फील करें, अच्छा he is talking about this road, this suggestion I had given. He will not feel alienated from politics. वो उछल उछल के वोट देगा जाके। Yes, he will go and he will vote in the election. So he will become a party to the election manifesto making. He will have a positive view about the political party. ये हुआ। Second, before using the MP Local Area Development Fund, the people should be consulted. अब जैसे अपना ये पुणे शहर है, इसमें एक ही सीट होगी शायद, मुझे लगता है लोकसभा की 2 सीट्स हैं, बारामती भी है, इसमें पुणे में ही आता है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। तो अब सपोज चलो ठीक है, एक बारामती हो गया, एक अपना पुणे डिस्ट्रिक्ट ये हो गया, ये अपना सिटी का एरिया हो गया और कुछ रूरल एरियाज आ जाएंगे, इसमें हो गया 10 लाख के आसपास, 8-10 लाख में कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई। अब अगर यहाँ का एमपी जो है उसको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं हर एक साल, वो 5 करोड़ उसको खर्च करने हैं, वो क्या करेगा, कुछ बड़े बड़े लोकेलिटीज में मिलेगा। जैसे यहाँ पे आ गया एक दिन एमपी का कोई रिप्रेजेंटेटिव, मोहल्ला सभा ही विल ऑर्गेनाइज कि भाई मोहल्ला सभा होगा, यू कैन कम एंड यू कैन गिव एडवाइस कि व्हाट इज टू बी डन फॉर योर एरिया। बोलेंगे जनाब ये देखो, ये रास्ता खराब है, ये है, वो है, इसको बनाना होता है। आप आगे बोलो कि देखो मेरे पास 5 करोड़ है, पूरे हमको पुणे में खर्च करना है, आप बताओ कि आपका सबसे इमरजेंसी क्या है जो उसको मैं काम कर सकता हूं, मेरे को 5 लाख रुपए यहाँ पे खर्च करने हैं, आप बताओ। तो पीपल विल से दैट ओके सर, द सीवर सिस्टम इज नॉट गुड, दिस शुड बी योर प्रायोरिटी। इमीडिएटली वो बोलेंगे 5 लोगों की हम कमेटी बना देते हैं, विद इन 1 वीक हम एक टेंडर दे देते हैं, और जब वो कंप्लीशन होगा उसके बाद आप सर्टिफिकेट लिख के दो कि वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, देन आई विल रिलीज द रेस्ट ऑफ द मनी। अभी मैं 50% रिलीज करता हूँ। People will feel happy with the member of the parliament. He has involved us in the decision making process. So at the national level, at the state level, you may not be a participant, but at the local level, you will be a participant in the decision making process. This is responsive political party. Bureaucracy. The bureaucracy should be in touch with the local population while making policies. अभी भी क्या है ना, we are living in the era of district planning. अभी भी district planning होता है, district magistrate is the most powerful position. आप देखते हो all the decisions are being taken by the district magistrate here in Pune. All the decisions. अगर नागपुर होगा तो वो सारा डिसीजन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लेगा,
कि कहाँ पे अभी, वो भी देखो, यहाँ पे ये स्कूल बंद होगा, यहाँ कॉलेज बंद होगा, यहाँ रोड बंद होगा, एवरीथिंग, हॉस्पिटल्स का ये, एवरीथिंग इज अंडर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। So while making the district plan, the bureaucracy should consult the grassroots level organizations like the ग्राम पंचायत, कि what is your priority, आपके गांव में क्या जरूरत है। जो मैक्सिमम गांव वाले बोलेंगे, रोड, सीवर सिस्टम, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, उसको आप भी प्रायोरिटी दो। लेट द पीपल बी इन्वॉल्व। अर्बन एरियाज में क्या है कि द पुलिस ऑफिसर, एसएचओ, डीएसपी, आपके तो कमिश्नरेट होगा ना पुणे, हाँ, पुणे से कमिश्नरेट, यहाँ, हाँ, यहाँ कमिश्नर ऑफ पुलिस होंगे, हाँ, तो यहाँ कमिश्नरेट है, तो यहाँ एसीपी, डीसीपी, ये लोग होंगे यहाँ पे। तो डीसीपी को क्या काम करना चाहिए, उनको चाहिए कि भाई एसीपी को बोलो कि आप मंथ में कम से कम एक बार आप किसी आरडब्ल्यूए से जाके मिलो, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उनसे पूछो क्या प्रॉब्लम है, सब कहीं कहीं चोरी की समस्या बहुत ज्यादा है किसी एरिया में, वहां पे जाके लोगों से आप बातचीत करो, आस्क देम टू गिव देयर सजेशंस, सो यू विल बी इन टच। अब जैसे सतारा का एसपी है कोई या एसएसपी है, उसको चाहिए कि भाई मंथ में एक दिन कम से कम एक थाने को विजिट करके वहां के जो आसपास के लोग हैं उनके साथ वन टू वन वो बोले कि व्हाट प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग विद द पुलिस। डीआईजी को क्या करना चाहिए, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार मीटिंग करनी चाहिए एसपी को लेकर के, डीएसपी को लेकर के। देन देयर विल बी कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज एट आवर डोर स्टेप्स, द एडमिनिस्ट्रेशन इज फॉर अस। यही काम अभी पीएम ने भी बोला है, जो मिशन कर्मयोगी और ये सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, उन्होंने बोला है ब्यूरोक्रेट्स को कि आपका ये काम नहीं है कि टाई कोट पहन करके आप अपने रूम में बैठे रहोगे इसी रूम में, बाहर आओ, विजिट द प्लेसेस, मीट द पीपल। रूल इज नॉट इंपॉर्टेंट, योर रोल इज मोर इंपॉर्टेंट, देन यू विल गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम द पीपल। आप उनकी समस्या को नहीं जानोगे तो आप हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। आज जो मेजर प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग, ठीक क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लूपहोल्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी काम नहीं करती है। हर एक काम पीएम तो वहां बैठा हुआ है वो तो नहीं करेगा ना, हर एक काम आपका सीएम तो बेचारा करेगा नहीं। यहाँ हर एक काम डीएम तो करेगा नहीं ना, उस इलाके में बोल दिया कि ठीक है आपको सफाई करवाना है। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो पुणे का है उससे जिम्मेदारी है, कमिश्नर की जिम्मेदारी है, कमिश्नर ने सबलेट कर दिया है। तो ये चीजें हैं, ये जो है, जो लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट है आज लोगों का, इट कैन बी देयर only if the political parties and the bureaucracies is responsive to the people. We need to respond to their problem. ये दिल्ली में प्रॉब्लम हो गया, ये बच्चों वाला जो प्रॉब्लम है, ये क्या है, वहां पे हमारा इंस्टीट्यूशन भी साइड में ही है, राउस के ठीक पास में हमारा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, हाँ, एकदम एकदम पास में ही है हमारा इंस्टीट्यूशन। तो अब क्या है, वहां इतना इतना वाटर लॉगिंग वहां हमेशा होता है। अब सोचो वो स्टूडेंट एरिया है, वहां पे आप कमर तक का आपका वाटर लॉगिंग हो रहा है, क्या ये लोकल अथॉरिटीज को दिखता नहीं था? न नाला की सफाई करवा रहे हो, न कुछ करवा रहे हो, इट इज हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग जाकर के बोल भी रहे हैं, वहां का लोकल लोग भी लिख करके देते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है। बाकी यहाँ पे भी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, हर एवरीवेयर, बड़ा बड़ा शहर में सब जगह ये सीवर का प्रॉब्लम चलता है, एवरीवेयर। मुंबई भी पूरा डूब जाता है बारिश में, एवरीवेयर। तो ये तो इनके भी फलता है ना। आप फिर बाद में ब्लेम करोगे लोगों को, भाई आपको फैसिलिटीज देनी है, आपको नाले साफ करवाने हैं मानसून से पहले, आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको क्यों सैलरी मिलती है, व्हाई यू आर गेटिंग सैलरी। ये इंपॉर्टेंट है कि वी डू नॉट रिस्पॉन्ड। लोग जाते हैं कंप्लेन करके, हाँ हो जाएगा, हाँ सफाई करवा देंगे, व्हाट इज इट। तो तो इसीलिए ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों का इन द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज इन द पॉलिटिकल पार्टी। ये तो हुआ सेकंड चीज। देन थर्ड, and thirdly, when we talk about this participatory democracy, आप लिख लो, थर्ड पॉइंट आप लिखो, यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है, मैं लिख देता। increasing the participation
the participation of the workers in the decision making at the workplace. अभी भी देखोगे वर्कर्स के बारे में डिसीजन हो जाता है, वर्कर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दैट इज व्हाई द डिसीजंस आर नॉट सक्सेसफुल। स्टेट बैंक में जाके देखो, वो लिख देते हैं पासबुक ओपनिंग 15 मिनट्स, कैश विड्रॉल इतना टाइम पे, लंबी लाइन लगी हुई है कोई कोई ब्रांच में। जाके पूछोगे भाई साहब इतना टाइम लग रहा है, बोला वो तो लगेगा टाइम, बोला नहीं उसमें लिखा है 15 मिनट, बोला कहाँ लिखा है 15 मिनट, बोला वहां लिखा 15, बोला कि कब, बोला वहां लिखा है, तुम दिखाओगे 15 मिनट्स लिखा है। मैं मुझसे क्या पूछ रहे, जाके मैनेजर को बोलो, उसके वापस में अपने में बड़बड़ाने लगेगा, ए काम नहीं, आदमी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, लिख देता 15 मिनट्स क्यों। द प्रॉब्लम इज दैट ही वॉज नॉट कंसल्टेड, मीन्स द वर्कर्स वे नॉट कंसल्टेड कि प्रैक्टिकली क्या होती, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वर्कर्स को बहुत इश्यूज नहीं है, लेकिन अपने बारे में जब उनका डिसीजन लेना है तो दे हैव टू बी कंसल्टेड, तो अगर ये सब चीज होता है देन बेसिकली एटलीस्ट एट द ग्रास रूट लेवल, नीचे के लेवल पे पार्टिसिपेशन कैन बी एंश्योर्ड, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ये हो गया आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। अगर आपसे कोई पूछता है, बहुत सारी चीजें, डेमोक्रेसी तो ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन कैन बी इवॉल्व। अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछता है 75 years of Indian independence, what has been the greatest achievement of India till date? What has been the greatest achievement of India till date? क्या जवाब होगा? What will be our answer? What we have achieved in the last 75 years? One major achievement of India. सोचिए, आपका देश है, हाँ, सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है हमारा अभी तक? हम्म, हम्म, हम्म। Or anything more? What we have achieved? हाँ, अपना अपना दिमाग लगाओ, कोई बात। I had earlier told, views can never be wrong. देखो, the major achievement of India in the last 75 years has been that, जो आप बोले उसको थोड़ा सा मैं बस उसी को स्ट्रीमलाइन कर देता हूँ, we have been a stable democracy. We have been a stable democracy. There has been not a single military coup in this country, and the governments have always changed by elections, not by military revolt, or we can say military coup. हमारे पड़ोसी देश जो आप बता रहे थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, military coup, they are not stable democracies. In India, there is a respect for civil supremacy. Even our defense forces, they respect the elected representatives. They have been elected by the people. So democracy has been stable in India. एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। फिर अगर आपको उससे कोई पूछेगा कि अच्छा ठीक है, हाउ फॉर डेमोक्रेसी हैज बीन सक्सेसफुल इन इंडिया, हाउ फॉर डेमोक्रेसी हैज बीन सक्सेसफुल इन इंडिया, तो इसमें आप बोलोगे सर
when we talk about the procedural aspect of democracy, when we talk about the procedural aspect of democracy, India has been successful to a large extent. ये है procedural democracy. So we have been successful to a large extent. In India, there has not been a single military coup. We are having a multi-party system. The government is changed to regular elections. There is universal adult suffrage. There is constitutional recognition of the rights of the people. We have got the respect for the recognition of the minority rights also in the constitution. So, procedurally speaking, sir, we are having a democracy. But when we talk about substance of democracy, प्रोसीजर तो सब कुछ ठीक है, डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास, बट इफ वी टॉक अबाउट द substance of democracy, then sir, we are lacking on many grounds, and there has emerged serious challenges before Indian democracy. जैसे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे चैलेंजेस है इंडियन डेमोक्रेसी के सामने. Or we can also say that Indian democracy at crossroads. ये सर ऐसे आएगा लिखने के लिए ना कभी कभी, या फिर पूछेंगे तुमसे इंडियन डेमोक्रेसी एट क्रॉसरोड्स, तो व्हाई वी से दैट, तो पहले तो अच्छी चीजें लिखना है कि व्हाई वी से दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, फिर आएंगे इंडियन डेमोक्रेसी इज एट क्रॉसरोड्स, देयर आर चैलेंजेस व्हिच आर बीइंग फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेसी. अब क्या क्या चैलेंजेस है इंडियन डेमोक्रेसी के पास? हमने कहा वी हैव गॉट मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है, वो हमारा है. वी हैव गॉट प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी, वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम. बट अगर आप देखोगे तो देयर इज लैक ऑफ इनर पार्टी डेमोक्रेसी. पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है अभी. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ले लो, कोई भी, मुश्किल है. बीजेपी, 3 लोग डिसाइड कर लेंगे हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, वही नाम फ्लोट कर देंगे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की मीटिंग में, कोई और पर्चा नहीं भरेगा, नो वन विल फाइल नॉमिनेशन, हो गया. उसके बाद कांग्रेस, वो तो सबको पता है कि वो जो फैमिली चाहेगी वही होता है, एवरीवन नोस इट. देन इसके बाद दूसरी और पार्टीज में आ जाओ, लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज में भी वैसा दम रहा नहीं, वैसा नहीं. इसके बाद इफ यू टॉक अबाउट द अदर पॉलिटिकल पार्टीज, जो रीजनल पार्टीज हैं, मास पार्टीज हैं, वहां पे भी इट इज नॉट लाइक दैट. एक पर्सनालिटी के इर्द गिर्द द होल वी कैन से द पॉलिटिकल पार्टी रिवॉल्व्स. आप देखो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अपने महाराष्ट्र में, वो हो गए, उनका भतीजा दूसरे वाले पार्टी वाला हो गया, कब मिल जाएंगे, फैमिली वाले हैं, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है. उसके बाद उन्हीं की पत्नी, उन्हीं पत्नी ने उनकी बेटी, उनका ये सब कुछ, ये सब जो वंशज का जो चक्कर है. इफ यू टॉक अबाउट राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी और उनका बेटा, यही 2 लोग हैं, ठीक है. इफ यू गो टू यूपी, मुलायम सिंह यादव वाज देयर, देन सन अखिलेश यादव, तो हो गया. इसके बाद और आगे बढ़ोगे, योर डीएमके, करुणानिधि वाज देयर, स्टालिन, स्टालिन के बाद एक और स्टालिन पैदा हो गया,
वन मोर स्टालिनिज्म, ये है। इफ यू टॉक अबाउट वेस्ट बंगाल, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड ममता बनर्जी। नहीं, ये रीजन भी है, इट इज नॉट ऑलवेज निगेटिव। रीजन है क्यों? क्योंकि इन्होंने सिंगल हैंडेडली उस पॉलिटिकल पार्टी को बनाया भी है। एनसीपी को शरद पवार ने बनाया, कांग्रेस ने भगा दिया धक्का मार के सबको। किसको किसको भगाया कांग्रेस ने? शरद पवार जी को भगाया, ममता दीदी को भगाया, सबको भगाया कांग्रेस ने, किसी को रखने नहीं दिया जो नेता बनता था। ऑल ऑफ देम फॉट सेपरेटली। शरद पवार ने ही पूरा वो नेतृत्व प्रदान किया एनसीपी को, और एनसीपी इमर्ज एज ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। अभी खत्म हो गया नेशनल पार्टी का दर्जा इनका, बट वंस इट वाज ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। तो ये क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे पार्टी को बनाया। व्हेन ही केम आउट ऑफ द कांग्रेस, ममता बनर्जी सिंगल हैंडेडली, कांग्रेस उनको कोई ये नहीं देती थी, वो बूढ़ा बूढ़ा सबको प्रेसिडेंट बना के रखती थी, क्यों? जो सब लोग उनके फैमिली वाले के बात करेंगे। ममता बनर्जी व्हेन शी लेफ्ट द कांग्रेस, उसके बाद शी सिंगल हैंडेडली फॉट अगेंस्ट द लेफ्टिस्ट। 24-25 ईयर्स का रूल था, उसको उखाड़ के फेंक दिया उसने। पूरे कांग्रेस पार्टी मिलके जो काम नहीं कर सकी, अकेला की। ऑब्वियसली क्रेडिट बिल्कुल। तो दे इमर्ज एज मास पार्टी, बट ग्रेजुअली वो क्या होता है, पार्टी वर्कर्स पीछे रह जाते हैं। फिर वही है, अपना भतीजा, अपना भाई, अपना चाचा, उसकी में कोई अच्छा काम भी वर्कर करता है, उसको आप आगे नहीं ले आते। ये प्रॉब्लम और इट इज देयर विथ ऑल द पॉलिटिकल पार्टी। ये एक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज लैक ऑफ इनर पार्टी डेमोक्रेसी। इसके बाद द कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, सेकंड पॉइंट में अगर आप देखोगे, तो वी से दैट वी आर हैविंग रेगुलर इलेक्शंस, ठीक है, बट रोल ऑफ रिलीजन एंड कास्ट इन पॉलिटिक्स। In India, it is said that people do not cast their vote, they vote for their caste. In India, people do not cast their vote, they vote for their caste. ये हो गया। Religion is also very important. तो ये religion और caste, they play a very important role in politics. Then criminalization of politics. Then corruption. What is the most popular definition of democracy? सबसे popular definition क्या है democracy का? हाँ बोलो, what is the most popular definition of democracy? It is a government यही है डेफिनेशन। यही आपने बोला था, कुछ और बोला था? हाँ, कुछ और बोला था? यही बोला था। ये परवर्टेड है। तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इंडिया में या आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, वो पूरा बंद कर दो कानून, वो कोई सुनना ही नहीं है लोगों की बात। इट हैज गॉन फार फ्रॉम द पीपल। हाँ, एंड देन एट द इलेक्शन टाइम यू बाय द पीपल। वही है जो अब्राहम लिंकन ने बोला, बट इन अ परवर्टेड फॉर्म। Not only this, in India, what we have seen is that there is a fatal triangle that has evolved.
There is a fatal triangle. First of all, we have got the politicians here. Then we have got the criminals. And we have the business. Politician, criminal, business nexus. ये इंपॉर्टेंट. सो पहले क्या होता था? The politicians used to take the help of the criminals. दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, बड़ा शकील, इनको हाँ इनका हेल्प लेकर के इलेक्शन जीतना, एमपी खरीदना, एमएलए खरीदना, पहले वो करते थे. अभी बोले अरे इनसे क्यों पूछना है, हम ही क्रिमिनल बन जाते हैं. ठीक है. सो basically many of our politicians are having criminal background, many of them. Then उसके बाद बिजनेस पॉलिटिशियन नेक्सस भी है, ये भी काम करता है क्योंकि कॉर्पोरेट फंडिंग इज देयर. नॉट ओनली दिस, मेनी ऑफ आवर सक्सेसफुल बिजनेसमैन दे आर अलाइंड टू द पॉलिटिकल पार्टी. वो लोग पार्टी के मेंबर्स भी हैं. तो जैसे नवीन जिंदल, वो हमेशा किसी पार्टी में रहता है, जिंदल ग्रुप के चेयरमैन. अर्लियर ही वाज फ्रॉम द कांग्रेस. He was a member of parliament from Congress. Abhi he is a member of parliament from BJP. हाँ. Accused and conviction. These are two terms. Yes. Yes. Innocent till proven guilty. तो एक्यूज है, मैं खड़ा हूं, मेरे अगेंस्ट में कोई केस कर देगा, ऐसे जो यहाँ का, हाँ एक केस कर दिया क्रिमिनल केस. I am an accused. I am not convicted. So, it is a basic human right, that is, I will be treated as innocent till proven guilty. वो तो हमारे देश में मीडिया ट्रायल, पब्लिक ट्रायल, वो तो पब्लिक को ऐसे ही गिल्टी ये बोल देती है. हाँ, वो सबको बोल देते हैं. हाँ, तो वो तो ये है. तो वो तो मीडिया ट्रायल हो गया. बट इट इज नॉट लाइक दैट. तो अगर आप नॉट ओनली, और भी प्रॉब्लम्स हैं. द वे इन विच आवर पार्लियामेंट इज वर्किंग, it is also a question mark. Decline of the parliament is there. So when we will be discussing the parliament, so I will be telling you why we say that parliament has declined. क्योंकि parliament is related with democracy. हाँ, इस बार तो थोड़ा सा कम हंगामा कर रहे हैं ये लोग. Yes, ये अच्छी बात है. There should be discussion in the parliament. ये चीज है. तो there are challenges before Indian democracy, and Indian democracy is really at crossroads. इसके लिए भी क्या चाहिए हम लोग को? स्टूडेंट का ये बोलते हैं सर, देयर शुड बी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू कंटेस्ट इलेक्शंस. नहीं, डेमोक्रेसी में देयर शुड बी ओनली वन क्वालिफिकेशन, दैट if the people basically they show the trust in that person, that person will be elected. Election क्या है? Election is a trust. Election is a trust. So in the election, people what they do, they basically show their trust to a group of people, that if these people will come to power, then public money or the taxpayers' money will be utilized in a judicious manner. That is the trust. ये trust होता है. तो हम उनको trust हुआ. तो एक ही चीज है. If they have got farsightedness, if they have got the vision, and the people feel that yes, this person has got the vision and he will not misuse the public money, if you have shown the trust, I have every right to contest the election. Because of socio-economic reasons, I may not be able to get the degree that you want. मेरा फैमिली गरीब रहा होगा, मैं कॉलेज तक नहीं जा पाया होगा, तुम ग्रेजुएशन रख दोगे. तुम ग्रेजुएशन रख दोगे, ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप ये रख दोगे. तो it's not like that. Educational qualification should not be there. हाँ, और हर एक काम तो गवर्नमेंट करेगी नहीं, कुछ काम तो आपको भी करना है. गवर्नमेंट इतना, सुप्रीम कोर्ट ने इतना किया, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में हमने क्या किया? वी हैव अमेंडेड इट. एंड एवरी कैंडिडेट हु इज कंटेस्टिंग द इलेक्शन, ही हैज टू फर्निश डिटेल्स इन द फॉर्म ऑफ एन एफिडेविट. उसमें सबसे पहले होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दैट हैज टू बी रिटन. तो वो क्यों होता है? नो योर कैंडिडेट, केवाईसी, नो योर कैंडिडेट. तो वोट देने से पहले हमें भी तो कैंडिडेट को देखना है. अच्छा, इफ यू वांट टू गिव वोट टू अ
कैंडिडेट हु इज वेल एजुकेटेड, ठीक है, देख लेते हैं कौन सा है। हम तो वो एक्सरसाइज नहीं करके जाते हैं और फिर हम बोलते हैं कि ये सब अनपढ़ लोग जो आते हैं, हमारी भी तो गलती है। तो दैट इज व्हाट आई हैड सेड, दैट इज द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द रैशनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। When we do not behave rationally, we will get the same type of representatives. People get the representatives that they deserve. People get the representatives that they deserve. अब बिहार में लोगों को नहीं पता है कि लालू सन इज नाइन्थ फेल, एवरीवन नो। नाइन्थ फेल होना कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिशियंस सन, पॉलिटिशियंस डॉटर्स कैन आल्सो बिकम पॉलिटिशियन, देयर इज नो हार्म इन दैट, देयर इज नो हार्म इन दैट। भाई बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनता है, तो व्हाई नॉट द पॉलिटिशियन सन विल बिकम पॉलिटिशियन। ये भी दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इफ ही इज इलेक्टेड बाय द पीपल, देयर इज नो हार्म इन दैट। मैं उसको भी गलत नहीं मानता हूं। भाई विरासत में ठीक है, वो घर में वो सीखा है, इन्वायरमेंट है उसके यहाँ, वो सीखा है, उसने अपने फादर को देखा डिसीजन मेकिंग करते हुए, बन गया वो भी, ही हैज गॉट मैच्योरिटी, बन गया, क्या दिक्कत है। देयर इज नो हार्म इन दैट इफ द पीपल इलेक्ट इन इलेक्शन, देयर इज नो हार्म उसको भी। लेकिन तो अब जनता को तो देखना है ना कि नाइन्थ फेल वाले को चूज करना है कि नहीं करना है। वो तो बेचारा हिज राइट इज देयर टू कंटेस्ट द इलेक्शन, एट द एज ऑफ 25 ही कैन कंटेस्ट द इलेक्शन, उसका तो अधिकार है चुनाव लड़ने का, वो लड़ेगा चुनाव। वोट देना आपका अधिकार है, अच्छे लोगों को वोट देना आपकी समझ में, यू शुड वोट। तो एवरीथिंग बेसिकली डिपेंड्स ऑन दीज एस्पेक्ट्स। तो हम अपनी गलती हम नहीं देखते हैं। बेसिकली द प्रॉब्लम विद इंडिया इज दैट व्हाई इंडियन सोसाइटी इज एट क्रॉस रोड्स, we feel that the neighbor should become Swami Vivekanand, we should not become Swami Vivekanand. You should vote for the right candidate, I should not vote for the right candidate. ये बहुत important. You should vote, you should marry without taking dowry, but when it comes to my son, I will take dowry. यही समाज है। दूसरा अच्छा करे, मैं अच्छा नहीं करूं। बिना हेलमेट के तुम घर से निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ट्रैफिक पुलिस वाला तुम्हें रोक देगा, तुम 50 रुपए उसको दे लोगे, वो नहीं लेगा, ही इज नॉट गुड। या वो ले लेगा तुमसे 50 रुपीज या 100 रुपीज, ही वॉज टेकिंग ड्राइव। आप नहीं बोले कि मैं बिना हेलमेट के निकला। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम है। वी फील दैट द अदर पर्सन शुड बी गुड, दिस इज द, इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम्स हो रही है। जो देश में जो प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं वो सारे प्रॉब्लम से, हम समझते हैं हम टाइम पे सब जगह पहुंचे, हमारे दूसरा टाइम पे सब जगह पहुंचे, हम आराम से पहुंचे। बैंक जाओगे, अभी तक आया नहीं, 10 बज गए, कितने बजे का टाइम है, 3 बार पूछोगे, सर 10 बजे, अरे ही इज नॉट ऑन द टेबल, सर आ रहा होगा, कहे कितना आ रहा होगा, मैं अभी से खड़ा हूँ, ये है वो है। और जब आपको ऑफिस जाना होगा, आप कितने बजे पहुंचे, ये मेजर प्रॉब्लम है। सो व्हेन इट कम्स टू वोट, वी डू नॉट वोट फॉर द राइट कैंडिडेट। तो जेएस मिल एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, इन्होंने बोला कि ट्रू डेमोक्रेसी विल बी एस्टैब्लिश्ड। उन्होंने तो और भी बहुत सारी चीजें बोली थी कि हाउ ट्रू डेमोक्रेसी विल बी देयर, ही टॉक्ड अबाउट एजुकेशन आल्सो, ये सारी चीजें हैं। लेकिन एजुकेशन तो आपको डिसाइड करना है कि एजुकेटेड हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। हियर बेसिकली जॉन स्टुअर्ट मिल हैड सेड दैट रियल डेमोक्रेसी will be feasible only when there will be aristocrats, only when there will be aristocrats। एरिस्टोक्रेट क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना, ए पर्सन बोर्न इन अ नोबल फैमिली इज एन एरिस्टोक्रेट। ही सेड नहीं, एन एरिस्टोक्रेट इज अ पर्सन, एन एरिस्टोक्रेट इज अ पर्सन हु गिव्स मोर इनटू लाइफ देन टेक्स फ्रॉम इट। एन एरिस्टोक्रेट इज अ पर्सन हु गिव्स मोर इनटू लाइफ देन टेक्स फ्रॉम इट। जो दूसरों को ज्यादा देता है, समाज को ज्यादा देता है और समाज से कम लेता है, ही इज एन एरिस्टोक्रेट। एंड what John F. Kennedy had said, John F. Kennedy का नाम सुना, he was the American president। John F. Kennedy had said, ask not what the country has done for you, ask what you have done for this country। हम तो एक वोट सही ढंग से नहीं देते हैं, उसके बाद हम सिर्फ कंप्लेन करते हैं, है ना। तो
ये है डेमोक्रेसी। तो जो व्यूज हम डेवलप करेंगे ऑन डेमोक्रेसी, इट शुड बी अ वेरी रैशनल व्यू. It is not that the only politicians have to be blamed for the mess that we are having in the society today. We have to be equally blamed for that. क्योंकि everything starts with election. Everything starts with election. हमें नहीं पता है कि वो जेल में बैठा हुआ है, वो चुनाव लड़ रहा है, वो इलेक्शन लड़ रहा है, इज एन एक्यूज. फिर भी हम जेल में रहते हुए लोगों को वोट देते हैं. हमें नहीं पता है कि वो मूवी में डांस करता रहता है, उसको टाइम नहीं होगा टू रिप्रेजेंट अस, फिर भी हम उसको वोट दे देते हैं. गोविंदा को जिताया था ना, इस बार जीता कि नहीं? इस बार इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हुआ है. गोविंदा जीता था, राम नायक को हराया था. राम नायक, नाम सुने होंगे, तुम लोग तो बहुत छोटे हो अभी. राम नायक बीजेपी के बहुत बड़े लीडर. अब 5 बार जीता था चुनाव मुंबई से. गोविंदा ने उनको हरा दिया इलेक्शन. और गोविंदा एक दिन भी पार्लियामेंट में मौजूद नहीं रहता था. उसको फुर्सत कहाँ डांस करने से? फुर्सत कहाँ है? उस टाइम तो पीक पे था ना, रास्ते से जा रहा था, आ रहा था, गाना गाते डांस कर रहा था. तो उसको पार्लियामेंट में जाने से कहाँ फुर्सत था? जाता ही नहीं था. तो ऐसा हाल था. तो वहां के लोग थे, "ये आता नहीं है." "अरे तुम्हें नहीं पता था कभी नहीं आएगा." न उसे पैसे की कमी है, ना कुछ की कमी है, वो तो इलेक्शन जीत गया. अब ढूंढते रहो, सड़क कौन बनवाएगा, ये कौन बनवाएगा, ढूंढते रहो. तो वी डोंट ब्लेम आवरसेल्फ. तो सबसे पहले वी शुड वोट. वी शुड वोट फॉर द राइट कैंडिडेट. वी शुड नॉट वोट फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी इन द इलेक्शन. हम सबसे बड़ी पार्टी का हमको देना है बस उसी अपनी जाति वाले को, अपने धर्म नहीं. आपके कैंडिडेट, आपके यहां से जो कैंडिडेट सबसे अच्छा होता है, आप उसको वोट. ही मे बी एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऑल्सो. देखो, बदलेगा समाज. देयर विल बी ए चेंज. स्टीरियोटाइप क्या है? सब उसी को वोट दे रहे हैं, हम भी उसी को दे रहे हैं. व्हाट इज द स्टीरियोटाइप? वी नो दैट he is having 10 criminal cases against him. We know it. We know that he is a movie star. वो कभी नहीं काम करेगा, क्यों फिर उसको वोट देना है? किसी पार्टी का भी वो हो तो व्हाई? ये इंपॉर्टेंट है. तो बेसिकली हाँ, एक्सेप्शंस भी है. अब जैसे वो केंटारो का प्रचार कौन करती है मैडम? हेमा मालिनी. हेमा. लेकिन वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम भी करती है. शी वर्क्स ऑल्सो, ऐसा नहीं है. शी वर्क्स ऑल्सो इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी. शी इज पॉपुलर इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी. शी विजिट्स द कॉन्स्टिट्यूएंसी. वो करती भी है काम. तो ऐसा तो नहीं है, ऐसे भी लोग हैं. सचिन तेंदुलकर को लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं. तो वैसे नॉमिनेटेड कि वो पार्लियामेंट में नहीं जाता है. ठीक है, नहीं जाता था बेचारा. उसने जो काम किया, वो काम अच्छे अच्छे एमपीज नहीं करते हैं. उसने क्या किया? गांव अडॉप्ट किया, विलेज अडॉप्ट कर लिया. एमपीज दे हैव टू अडॉप्ट द विलेज. ही अडॉप्टेड विलेज. और वो विलेज को उन्होंने बहुत आदर्श विलेज बना दिया. उसके बाद और छोड़ो, जो सिक्स जो उनका ईयर 6 इयर्स खत्म हुआ ना एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो और उनकी वाइफ, दे मेट द प्राइम मिनिस्टर एंड दे, वो अपना चेकबुक साथ लेके गए. जितनी सैलरी 6 इयर्स की ड्रॉ की थी ना, जितना पैसा गवर्नमेंट से लिया था, सारा चेक पे फिलअप किया, पीएम को दे दिया, पीएम रिलीफ फंड में. तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. बट यस, तो हम लोग को ये भी सीखना भी चाहिए इन लोगों से भी कि नहीं ठीक है, सेल्फलेसली ये लोग इससे तो लोग तेंदुलकर को क्रिटिसाइज किए कि नहीं, ही नेवर विजिट्स द पार्लियामेंट, ही वाज ए नॉमिनेटेड मेंबर. ही वाज ए नॉमिनेटेड. उसको लोगों ने इलेक्ट करके नहीं भेजा था. जिसको इलेक्ट करके भेजी वो तो करता ही नहीं है काम. और वो ही वाज ए नॉमिनेटेड मेंबर इन द राज्यसभा. तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी, सब्सटेंस को सुधारना है तो पीपल शुड वोट. दे शुड वोट फॉर द राइट कैंडिडेट. वी शुड नॉट थिंक अबाउट कास्ट, वी शुड नॉट थिंक अबाउट रिलीजन. ये पैरोकियल चीजें हैं, वो हमें नहीं सोचना है. तो डेमोक्रेसी ऐसा टॉपिक है ना, इस पे लोग बहुत बहस करते हैं. बट रैशनलिटी जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन व्हेन वी आर डिस्कसिंग द थिंग. ये तो डेमोक्रेसी हुआ, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी देयर इन डेमोक्रेसी. इसके बाद देयर इज अनदर टर्म दैट वी कम अक्रॉस, इट इज रिपब्लिक. देखो, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. डेमोक्रेसी इज a government. Here when we talk about republic, republic is a state. So republic, it is a state.
where the head of the state is an elected one and is not a hereditary monarchy. Hereditary monarch. So India is a republic, our president is an elected one. ये हो गया आपके आइडियल्स, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स वाले तो मैंने सारे क्वेश्चंस आपको अंदर अंदर बता दिया, मेंस का भी बता दिया। ओवरऑल व्हाट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, एक क्वेश्चन लिख लो। व्हाट आर द एडजेक्टिव्स attached to the expression republic the tail part, how far these adjectives are defendable in the contemporary times. You see, there are two parts of the question. In the first part, what are the adjectives attached to the expression republic? Sovereign, socialist, secular, and democratic are the adjectives attached to the expression republic. ठीक हो गया पहला पार्ट हमारा। सेकेंड पार्ट में हाउ फार दीज एडजेक्टिव्स आर डिफेंडेबल इन द कॉन्टेम्पररी टाइम्स। आज के दिन में ये जो एडजेक्टिव्स हैं, सॉवरेंटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, उसके बाद डेमोक्रेसी, if they are defendable in the contemporary times or means if they are relevant in the contemporary times or not. तो यहाँ जो सेकेंड पार्ट जो आपका आंसर का है, that has to be a bit analytical answer, ठीक है। ये कैसे लिखेंगे मैंने पूरा आपको डिस्कशन में भी बताया, मैं उसकी एक समरी आपको 150 वर्ड में बताता हूँ, लिख लेना। फर्स्ट पार्ट का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, लिखना sovereign, socialist, sovereign, socialist, secular and democratic, secular and democratic are the adjectives attached to the expression republic, attached to the expression republic. ये हो गया। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं, हाउ फार दे आर डिफेंडेबल इन द कॉन्टेम्पररी टाइम्स। तो सेकेंड पार्ट को ऐसा नहीं लिखेंगे, सेकेंड पार्ट करके पैराग्राफ चेंज करेंगे और वो सेकेंड पार्ट हो जाएगा। इसमें एक एक को आपको लिखना है एक एक पैराग्राफ में। तो लिखना कैसे वो मैं बताता हूं तरीका आपको। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ यू कैन राइट in the
era of interdependence, in the era of interdependence and globalization, the aspect of the aspect of sovereignty holds good, holds good. Full stop. India takes its foreign policy decisions. India takes its foreign policy decisions independently, that is without any external pressure. Without any external pressure. आप देखो यूक्रेन रशिया वॉर जब हुआ, we we are close to Russia. रशिया इज ए स्ट्रेटेजिक अलायंस. हमारा इजराइल और यहां से पूरा डिफेंस का सामान आता है. वी आर ऑल्सो गुड एलाई ऑफ, वी आर स्ट्रेटेजिक एलाई ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. दोनों के साथ हमने बैलेंस किया. अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जीतने के बाद सबसे पहले कहा रशिया ही तो चले गए, और एक जगह गए, फिर रशिया भी गए. यूक्रेन को बुरा लगा, बोला ठीक है तुम्हारे यहाँ भी आ जाते हैं 2 महीने बाद, यूक्रेन भी चले जाएंगे. सो व्हाट इज इट? इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी. हमारे जयशंकर साहब से पूछा कि यू आर बाइंग दिस हाँ ऑयल फ्रॉम रशिया, तो उन्होंने बोला ठीक है ना, आप भी तो खरीदते हो, ये हमारा नीड है, ये हमारा नीड है, हम खरीदेंगे. आप जो करो वो ठीक है, हम जो करें वो गलत है. ऐसे थोड़ी ना होता है. इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी इवन इन द एरा ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ये चीज ठीक है ना. तो सॉवरेंटी इज रिलेवेंट इवन टुडे. हमें यूनाइटेड नेशंस में जिसका जब सपोर्ट करना होता है वी सपोर्ट. कभी अगर अमेरिका को क्रिटिसाइज करना होता है वी कैन क्रिटिसाइज अमेरिका ऑल्सो. कभी रशिया को भी हमें कुछ बोलना होता है वी क्रिटिसाइज रशिया ऑल्सो. सो दैट इज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी. अब अगले पैराग्राफ. In the era of liberalization, in the era of liberalization, socialism, that is the role of the state, the role of the state is still important, is still important, and the state has to play, the state has to play an important role in the light of uneven development, in the light of uneven development which has taken place in this country country, full stop. यहीं पे लिखिएगा वेलफेयरिज्म, वेलफेयरिज्म is as important, is as important in the contemporary times, in the welfareism is as important in the contemporary times as it was in the pre-liberalization era, as it was in the pre-liberalization era, and and the state
has a larger role to play, has a larger role to play as a regulator of the economy, as a regulator of the economy by making or by enacting labor legislations and consumer protection acts, labor legislations and consumer protection acts. आज देश में पूरा ये गवर्नमेंट का क्यों कितना क्रिटिसिज्म हुआ, एम्प्लॉयमेंट 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 ये है ना, तो गवर्नमेंट ने अभी बजट में क्या किया, स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट, इस पे हम जोर दे देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो बेसिकली अगर आप देखो तो स्टेट का तो आज भी तो रोल है ना। अभी भी देखो हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करते हैं कि देयर शुड बी गुड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, क्यों, देयर शुड बी गुड रोड्स, ये सब तो स्टेट का ही काम है। वेलफेयरिज्म तो आज के दिन में भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन द नेक्स्ट पैराग्राफ ये हो गया सोशलिज्म सेकुलरिज्म। नेक्स्ट लिखिएगा, इन द एरा ऑफ इनटॉलरेंस, इन द एरा ऑफ इनटॉलरेंस the Indian brand of secularism, the Indian brand of secularism that is equal treatment to all the religions, equal treatment to all the religions, has assumed importance, has assumed importance, and the state should not be biased towards any particular religion, towards any particular religion. Then next, in the next paragraph, democracy, democracy not only as a form of government, not only as a form of government, but also as an ideal, as an ideal is relevant, is relevant in the contemporary times. So as an ideal matlab, there should be liberty, equality, justice in the society. So it is not that only the procedure has to be followed, but the substance of democracy has also to be there. We need a society where everyone should be free, there should be equality, there should be justice. Such type of questions, that is unplanned questions, can be asked in the examination. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो मैं कल भी यही आपको बोला कि जब तक आप इनको समझोगे नहीं ना, मेंस में आंसर प्रियम्बल वगैरह से, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू आंसर। इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको प्रियम्बल के कुछ टॉपिक्स थे जो पढ़ाया। कल की क्लास में थोड़ा सा और बचा हुआ है 15-20 मिनट का, वो डिस्कशन लिबर्टी इक्वालिटी जस्टिस है, फिर वो करके देन विल मूव इनटू पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विल स्टॉप हियर फॉर द डे।